Hello dosto, I hope you all are well and doing well for your exam. And here I took a question from mathematics, and this question asked in JEE Mains paper, and this question is from vector algebra. Little bit easy question, but this is a math. So I am going to solve this question. The question says if a vector is equals to ai cap plus 2k cap, and b is this and c is this, r cap into b cap plus b cap in cross c cap is equals to 0, and r dot a cap is equals to 0, that r cap dot c cap is equals to, we need to calculate this one. So the given one is cross r cross b plus b vector cross c vector, which is equals to 0. This is given. From here, a vector r vector cross b vector minus of b vector cross c vector. when we change it, c, जब हम c को इधर लाएंगे b को इधर लाएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हमें साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा. ये जैसे ये इधर है, ये देखो, इधर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, b को कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस c वेक्टर cross b vector, which is equals to 0. This one, and here r vector c vector, which is equals to lambda of b vector. You must remember one result. If any vector like this 0 के इक्वल हो तो वो दोनों पैरेलल होंगे. जो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में, तभी ये 0 होगा. समझ आई? आई होप यू गेट इट. अगेन वी नो, हम जानते हैं कि आर वेक्टर ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों 0 हैं. सो सी वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 0. सो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस लेमडा ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 0. Are you get it? From here, lambda is equals to minus of c vector a vector upon b vector a vector. Are you get it? So here I am going to solve from here. R vector dot c vector which is equals to c vector plus lambda of b vector dot c vector. From here, the value of lambda that I solve from here, that I solve here. So from here I get plus c dot a upon b vector dot a vector into b vector dot c vector. So magnitude of a, when we multiply c into c, magnitude of a, c dot a upon b vector a vector into b minus c vector, b dot c vector. From here, the magnitude of c, which is equals to 74 minus 15 by 8, 3 into 8, 74 minus 120 upon 3, 74 minus 40, which is equals to 34. Are you get it? What I solve here, this is a math. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा. बाकी थैंक यू सो मच लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दबा के.